आज के क्लास में हम आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में कुछ आर्टिकल बताने जा रहे हैं। उसका प्रूफ पूछता है, जैसे पूछेगा आपको प्रूफ दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस, ये आपको प्रूव करने के लिए पूछेगा। ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका प्रूफ कैसे होगा आप देखिए। प्रूफ में आप लिखिए लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू बीटा, ये होगा। तो इसलिए होगा साइन अल्फा इज इक्वल टू x एंड साइन बीटा इज इक्वल टू y। नाउ वी नो दैट sine alpha plus beta, this is the formula of trigonometry. We have already discussed this formula. Sine alpha plus beta is equal to what? Sine alpha into cos beta plus cos alpha into sine beta. अब हम लोग क्या करते हैं, साइन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू x। cos बीटा इज नॉट गिवन, तो cos बीटा इज इक्वल टू वी नो दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन बीटा इज इक्वल टू y। वी सब्स्टिट्यूट हियर नाउ x into 1 minus sine beta is equal to y, therefore y square we write down, and sine alpha is equal to x, therefore we write down here x square into y is equal to x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square। ये हो गया आपको sine alpha plus beta is equal to, now we write down here alpha plus beta is equal to sine inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. Sine is written down to right hand side. We write here sine inverse and then we get alpha plus beta is equal to this much. Therefore, we substitute the value of alpha. Alpha is sine inverse x. Therefore, sine inverse x and beta is equal to sine inverse y. We write down sine inverse y is equal to sine inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. That's all. ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपको हमको पूछता है कि प्रूव दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये पूछता है। इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा and cos inverse y is equal to beta, therefore cos alpha is equal to x and cos beta is equal to y. Cos square x is equal to alpha, therefore cos alpha is equal to x. Cos inverse y is equal to beta, therefore cos beta is equal to y. Now cos alpha plus beta, we know from the formula, we have already
This formula has been discussed. Cos alpha plus beta is equal to cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta. Now, ये cos beta, cos alpha is equal to x and cos beta is equal to y. Sin alpha is not given here. Therefore, we convert sin alpha is equal to 1 minus cos square alpha, and sin beta is not given. Therefore, we convert it 1 minus cos square beta is equal to x into y minus 1 minus cos alpha is equal to x. Therefore, we write down here x square into cos beta is given, that is y. Therefore, we write down here y square. Now, alpha plus beta we write down. Cos is written down towards the right hand side. Inverse will be taken here. Cos inverse x y minus under root 1 minus x square into 1 minus y square. And we substitute the value of alpha and beta. Alpha is equal to cos inverse x and beta is equal to cos inverse y. Therefore, we can write down here cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse x y minus under root 1 minus x square into 1 minus y square. Similarly, we can prove that cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse. Similarly, in this way, we can prove that cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse xy. Here it will be plus 1 minus x square and 1 minus y square under root. Similarly, we can prove that in examination, suppose that cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy under root 1 minus x square into 1 minus y square is to be asked to prove. Similarly, can we ask cos inverse x minus cos inverse y is equal to this much? In the same way, we can prove that. In the case of plus, here will be minus. In the case of minus, here will be plus. In this way, we can prove that. आज के क्लास में इतना ही रखते हैं. आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में और आर्टिकल्स कुछ हैं, प्रूफ बताएंगे और प्रॉब्लम बताएंगे. हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसको जो है सो सब्सक्राइब करें. और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस.